मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हक़ खुदइरादियत की जद्दोजहद को कुचलने और भारतीय कब्जे के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए भारतीय हुकूमत कश्मीरी सियासी जमातों पर पाबंदी लगा रही है। हाल ही में मोदी हुकूमत ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि जमात इस्लामी जम्मू और कश्मीर पर पहले से आयद पाबंदी में मजीद 5 साल के लिए तौसी कर दी। पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हक़ खुदइरादियत की जद्दोजहद में मसरूफ सियासी जमातों पर पाबंदी आयद करने के भारतीय फैसले की मज़म्मत की है। A total of 8 Kashmiri political parties have been outlawed in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Their leadership and cadres are also facing persecution. These oppressive measures reflect a vicious intent by India to stifle dissent and freedom of expression in IIOJK in complete disregard for international human rights and humanitarian law. India should immediately lift the curbs on banned Kashmiri parties, release all political prisoners and dissenters, and forthwith implement the UN Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. जहां एक तरफ पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की आवाज़ को आलमी ऐवानों तक पहुंचाने के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहा है, वहीं कश्मीरी क़यादत भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हकीकी सूरत हाल को आलमी बरादरी तक पहुंचाने के लिए कोशां है। इस सिलसिले में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ वानी ने जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम आलम को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज़ भारतीय अफ़वाज के हाथों जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों से आगाह किया। The right-wing BJP-led regime, which cherishes to violate UN Security Council resolutions on Jammu and Kashmir, is constantly violating the basic rights of the people, threatening and torturing journalists, putting leadership behind the bars. Virtually every hand is cuffed and every voice is gagged. Even the voices from outside who raise the voice for the besieged people of Jammu and Kashmir are treated as traitors and threat to national security and not given entry to India. The recent example is that of Professor Natasha Cole. Let me remind you all that cost of asking for basic rights and right to self-determination is being paid in the form of property seizure, stolen identity, broken families, half widows, tortured and blinded youth, helpless elders and incarcerated leadership for decades. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मोदी हुकूमत का जम्मू और कश्मीर में सब ठीक होने का दावा दुरुस्त है, तो मकबूजा खित्ते में काबिज़ भारतीय अफवाज की तादाद में इजाफा क्यों किया जा रहा है और कश्मीरी आवाम को काले कवानीन का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। It looks everyone in this room has been misled by Indian false mantra of normalcy and development, which Indian government is propagating through its missions and media. If everything is good in Kashmir, why increase in troops build up? Why black laws like PSA, Armed Forces Special Power Act and Unlawful Activities Prevention Act is enacted? You cannot ignore and turn blind eye to the relentless violations of human dignity. It is imperative to demand justice for victims and accountability for perpetrators. Human rights situation that has consumed 845 innocent lives in fake encounters and so-called siege and search operations, witnessed a record of 2,396 severe torture cases, 22,173 arbitrary arrests, demolition of 1,144 civilian properties, land grab, confiscation of passports and properties, the denial of civil rights like right to freedom of assembly, association, peaceful protest, religious rights. This situation is that of Indian occupied Jammu and Kashmir. मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज़ भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हकूक़ की पामालियाँ आलमी बरादरी के लिए एक सवालिया निशान है।